Moving on now, as Bihar gears up for assembly polls later this year, the Election Commission's recent announcement of a special intensive revision of the state's voter list has caused a stir in the state. Now, the stated goal of the exercise is simple: to clean up the rolls by adding eligible voters and removing those deemed ineligible. चुनाव आयोग ने निर्णय किया था कि वो राजनीतिक दलों से लगातार समन्वय स्थापित करेगा। इसी क्रम में लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची को अशुद्ध होने का शिकायत भी की और हर बार कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध करना चाहिए। इसलिए इस बार बिहार में 2002 की तरह ही एक महीने के अंदर जुलाई से अगस्त के बीच में मतगणना फॉर्म बांटे जाएंगे और वापस भी लिए जाएंगे। ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। But there's more to it. The move has sparked a fiery political battle, with the opposition calling it a threat to voter rights and the ruling BJP defending it as a vital step for electoral integrity. So what does this revision really mean for Bihar's 8 crore voters? Well, this is the first exercise of its kind in Bihar since 2003. The Election Commission says the revision is crucial due to migration, urbanization, unreported deaths and concerns around duplicate and illegal entries, including foreign nationals. Now here's the twist. Under the law, voters must be registered where they ordinarily reside, not where they just own property. This hits Bihar's migrant population hard, who still vote in their home constituencies but live elsewhere. Now, while the intent behind the move could be noble, its execution has raised questions about its impact. So let's understand the pros and cons of this move now. The Election Commission's special intensive revision in Bihar aims to clean voter rolls by removing duplicate and deceased names, boosting transparency and curbing fake voting. It encourages registration at one's actual residence, with parties allowed to flag errors. But concerns remain. With 8 crore voters, there's a risk of genuine exclusions, especially migrants, the poor and PWDs. The opposition alleges political misuse in flooded areas may face major logistical hurdles. Now, at the core of these cons is a document mandate for 2.93 crore voters missing from the 2003 rolls. But with each document tied to Bihar's harsh socio-economic realities, access and eligibility are anything but straightforward. Let's look at how this has been played out politically. The Congress and India bloc parties have slammed the move. They allege this is not a revision but a reset of the voter list, and one that could deliberately exclude genuine voters using the power of the state. Tejasvi Yadav of the RJD calls it a conspiracy, asking how such a massive exercise can be completed in under 25 days, especially when floods have hit over 70% of the state. अभी आप सबको पता है, सचेत कीजिएगा गांव में लोगों को। ये लोग पहले गरीबों को, जो लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब शोक का राज, लोकतंत्र और संविधान ने हमको जो ताकत दी है, उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। कटवाना चाहते हैं। जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फलतुआ का जुड़े ना। The India bloc will take to streets on 9th of July by participating in the Bharat Bandh called by the left parties over EC's decision, while the Association of Democratic Reforms, a non-governmental organization, has approached the Supreme Court questioning the manner and timing of the Election Commission's decision. On the other hand, the BJP is backing the poll body to the hilt. They've accused the Congress of hypocrisy, saying the party is fine with ECI's decisions when it wins elsewhere, but questions the process when it doesn't suit them. BJP's Bihar leaders say this is about stopping fake voters, identifying migrants voting in 2 places and ensuring a clean, fair election.
आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूं कि एक पारदर्शी ये प्रक्रिया है और जिसको आज नहीं तो कल अपनाना ही था। इस प्रोसेस का होना जरूरी है ताकि उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जो दूसरों की वजह से इस सूची से बाहर हो जाते हैं। So here's the bottom line. The special intensive revision is a double-edged sword, viewers. On one hand, it's an attempt to modernize and sanitize Bihar's outdated voter rolls. On the other, its timing, execution and implications for millions of migrants and the vulnerable make it politically loaded move. Will it build trust or deepen suspicion? That remains to be seen.